In this video, we will be learning about addition of numbers up till 5 digits. ओके तो हम अभी तक सिंपल एडिशन करना सीख रहे हैं और हम अब करेंगे 5 डिजिट नंबर्स की एडिशन. एडिशन इज़ एक्चुअली वेरी सिंपल प्रोसेस अगर आप उसको एक तरीके से करें जैसे कि हम प्रीवियसली वीडियोस में प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज़ करते हुए एडिशन कर रहे थे. तो लेट्स स्टार्ट एंड जस्ट सिंप्लीफाई द एडिशन प्रोसेस फॉर अस. रिमेंबर ऑलवेज राइट द बिगर नंबर फर्स्ट एंड देन कम्स द स्मॉलर नंबर. ठीक है, तो हम यहाँ पर नंबर्स को रीराइट कर लेंगे जिनको हमने ऐड करना है. एंड इसी तरह 12,446. ओके, तो द फर्स्ट वन इज वंस, राइट. फिर आते हैं टेंस हमारे पास, then we have hundreds, then we have thousands, and then we have 10,000. ठीक है, तो ये हमारे जो हैं हमने प्लेस वैल्यू कर लिया इन सबको. और अब हम इनकी एडिशन करेंगे. 6 + 2 is, what is 6 + 2? 8. That is correct. Now do the mental math and practice this. 5 + 4. Yes, think about it. What is 5 + 4? It's 9. Then we have 4 + 1. 4 + 1 is 5, right? Remember we are adding the same place value numbers into each other. ठीक है, इसी तरह हम thousands में देखेंगे. 3 + 2 is 5. Alright, and we have 4 + 1 is 5, right? So we have 55,598. alright, इस सब की वैल्यू क्या है? हमने अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू इनको ऐड किया था, right? Let's move on to the next slide in which we will be solving more of the questions जो हमने अब तक एडिशन की है अप टिल 5 to 6 डिजिट नंबर्स. ठीक है, हम इनको प्रैक्टिस करेंगे. दिस इज़ वेरी सिंपल, लेट्स डू इट क्विकली. वंस को वंस में ऐड करेंगे, टेंस को टेंस में. ठीक है, तो 6 + 0 इज एनीथिंग दैट इज एडेड इन 0 इज द आंसर इटसेल्फ. ठीक है, तो 6 आंसर आएगा हमारा यहाँ. 3 + 1 इज 4. लाइकवाइज हम 3 डिजिट नंबर्स पे मूव करते हैं. We are gonna add 1 in 7 and that is 8. We are gonna add 1 in 3 and that is 4, and 6 + 2 is 8. That is correct, right? अच्छा जी, next C part, I want you guys to note it down on your copy because you are going to practice this question yourself. It's very easy. It's a 3-digit number added in another 3-digit number. Let's look at the 4-digit number. 2 + 0 is, yes, it's ones. तो हम ones को ones में ऐड करेंगे, tens को tens में, hundreds को hundreds में और thousands को thousands में. ठीक है, तो 2 + 0 is 2, 1 + 6 is 7, 1 + 6 is 7, and 6 + 3 is 9. That is correct. Okay, now move on to the 5-digit number. ठीक है, हम 5-digit नंबर पे मूव करते हैं. हम इनको पहले प्लेस वैल्यू चार्ट इन पर ड्रॉ कर लेते हैं कि दिस इज वंस, दिस इज टेंस, दिस इज 100, दिस इज 1000, राइट, एंड दिस इज 10,000. ऑलराइट, तो हम वंस को वंस में ऐड करेंगे. 6 + 1 is 7, 9 + 0 is 9, 6 + 1 is 7, 5 + 3 is 5, 6, 7, 8. So answer is 8. And then we have 7 + 1 is 8. So this is how you'll add all the same place values into each other. ठीक है, अब इसमें ये आप देख सकते हो कि they have written the smaller number first and then the bigger number. तो इसमें आपने confuse नहीं होना. We'll put 0 over here for just our understanding ताकि हम confuse ना हो कि both of the numbers are of 5-digit numbers. ठीक है, तो 2 + 3 is what? It's 5. That is correct. 7 + 0 is 7, 1 + 2 is
3. 3 plus 1 is 4. And the last is 6 plus 0 is 6. Alright, now let's do the next question. This question you should be doing it yourself. ठीक है, जिनके नीचे मैंने डबल लाइन ड्रॉ किया है, just note it down in your rough copy and then you will do it yourself later. Okay, just for the practice. This question you should do it yourself as well. I'll just discuss the answer at the end of the session. Okay, अच्छा जी, we have how many digits are there? 1 2 3 4 5 6. So this is of 6 digit numbers. ठीक है, तो हम इनकी place value put करते हैं कि इसकी place value क्या है? ones, this is tens, this is hundred, this is thousand. ठीक है, this is 10,000 and this the last one is 100,000. ठीक है, तो हम सेम प्लेस वैल्यूज को सेम प्लेस वैल्यूज में ऐड करेंगे. जैसे 1 plus 4 is 5, 2 plus 6 is 8, 1 plus 4 is 5, 7 plus 2 is 9, 7 plus 0 is 7 and 6 plus 3 is 9. alright, so हमने सेम प्लेस वैल्यू को सेम प्लेस वैल्यूज में ऐड किया है. यू कैन सी ओवर हियर 979,585 is the answer of this question. I hope you guys have understood how to do the simple addition of 5 to 6 digit numbers, and the more you practice it, the more you will be more comfortable in understanding the addition process. See you guys in the next video.